Dear students, today I am back with a new topic on coordinate geometry, and the topic is hyperbola. Okay, we have studied about ellipse, we have studied about parabola, and now in the same series, the concept in mathematics, we are going to extend that to a new topic called hyperbola. Okay, so in hyperbola, first of all we need to define it, right? So what a hyperbola is? A hyperbola is a conic section of which eccentricity is greater than unity. I hope that you all might be familiar with the term eccentricity because we discussed in ellipse the term eccentricity. Now it is a conic section. You all know that conic section are those sections that are obtained by cutting a cone at different angles. So a hyperbola, an ellipse, circle, parabola, etc., they are all conic sections. Now the eccentricity should be greater than unity. This is the first point. Okay, that means E should be greater than 1. Now coming to the second detailed definition, this is a hyperbola is the locus of a point which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point in the plane to its distance from a fixed straight line in some plane is a constant. Okay, quantity that is greater than 1. So basically what we are seeing that locus of a point which moves in a plane, that means in a 2D plane, such that the ratio of its distance from a point in the plane to its distance from a fixed straight line is constant, and that is eccentricity, and that is greater than 1. Here in the next line it is written that the fixed point is called the focus and the straight line is called the directrix. It is same as it was in the case of ellipse, okay, and the ratio is called the eccentricity. So there is nothing to explain here, right? Now coming to the diagram, see, this is, let us say these are the coordinate axes, the yellow one, and this is the hyperbola. Okay, this figure is the hyperbola, this white one, and let us say that point P lies on the hyperbola. Okay, the focus is S. Obviously there will be a corresponding focus on the left side also, and the directrix is Zn. Okay, sorry, this is not the y axis. Actually this is a directrix. Parallel to it we can draw the coordinate axis also. That means if I draw it with red, there will be a coordinate axis like this. Okay, in the center there will be a y axis. Here it is a bit misleading. In the center here something like this, there will be a y axis, and Zn is the directrix. Actually this is not up to the scale. I am just showing you all for reference purposes. We will later on see the detailed diagram. Okay, so Zn is the directrix, Ps is greater than Pm. Okay, Ps is greater than Pm, and Pm is perpendicular to Zn. That means Pm is perpendicular to the directrix. Then eccentricity is equal to Ps upon Pm. The main thing of doing everything was to conclude to this point. That means the distance of any point on the hyperbola, from a fixed point is Ps, and the distance of that point from a fixed straight line Pm, the ratio of both is equal to a quantity called eccentricity, and that is greater than 1. Now standard equation, let us see the standard equation. The standard equation of hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. In the case of ellipse it was x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, right? Now there is one more relation, and this is a square into e square minus 1 is equal to b square. Okay, now how this equation comes, you can refer to NCERT book, there it has been proved, because if I would have taken this proof, then the whole lecture would have been encompassing that particular proof itself. Okay, so moving ahead, see, this is the detailed diagram of a hyperbola. It seems a bit clumsy, but I will explain it one by one. What it is this? The green solid lines
are coordinate axis, okay, y axis and z axis. C is the center, okay, center of the hyperbola, or here you can refer it to as origin in the standard case. Now this curve and this curve, they are our curve hyperbola. S and S dash are nothing but foci of the hyperbola, focus of the hyperbola. A and A dash are vertices, and see this line MZ and MZ dash extended downwards, they both are directrices, okay. So they both are directrices, and this point, see P dash, no, L dash, it is passing through focus. Here also K dash is passing through focus. These are latus rectum, okay. Now I hope that everything is clear now. What is A dash? What is A dash? It is vertex. This is also a vertex. Z, what is Z? The directrix intersect x axis at point Z. Here this is the another directrix. Similarly, the C is the center of this curve. Now if I apply that particular definition of hyperbola on point P, okay, I am taking a point P, and what I can write here, SA upon AZ is equal to E. I am writing this for not for point P, for point A, because point A also lies on, where it is lying, on the hyperbola, okay. So the distance of this point from a fixed point, distance of this point A from a fixed point focus, and divided by the distance of this point from a straight line. क्या कर रहे हैं, देखो A पॉइंट लाई कर रहा है हाइपरबोला पे, हमने क्या कहा था कि A का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से, तो ले लिया ना डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट क्या है S, फिर A का डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से, तो ले लिया डिस्टेंस AZ, वो क्या है डायरेक्ट्रिक्स, तो SA बाई AZ क्या होना चाहिए, एक कांस्टेंट इसेंट्रिसिटी. अब अगर इसी पॉइंट पे A पर हम उस वाले डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस मेजर करें, तभी भी ये होल्ड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. तो कैसे लगाएंगे हम लोग, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. अब हम फिक्स्ड पॉइंट क्या लेंगे, एस डैश. क्यों, क्योंकि हम उस डेफिनेशन को दोनों तरफ लगा के देख रहे हैं कि दोनों, अगर वो डेफिनेशन वैलिड है एक साइड के फोकस के लिए, तो दूसरे साइड भी वैलिड होना चाहिए. तो फिर ए का डिस्टेंस हम ले रहे हैं एस डैश से, देखिए यहाँ लिखे एस ए डैश, एंड अब हम ए डैश का डिस्टेंस लेंगे इस डायरेक्ट्रिक्स से, ओके. तो ए डैश जेड, तो एस ए डैश अपॉन ए डैश जेड इज ऑल्सो इक्वल टू ई, ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग बेसिकली, आई एम सेइंग दैट if the ratio of SA to AZ is equal to E, then it should also be obeying that particular rule from when we are measuring the distance from this directrix. That means if I am measuring the distance of A dash from S, okay, I am measuring the distance of A dash from S, and I am measuring the distance of A dash from this directrix, then also it should be equal to E. Now there are few points here written like A dash is equal to twice of A, right? And see, B and B dash point are lying on this y axis, but they don't lie on the curve. This point should be well understood. मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि देखिए A dash और A वर्टिसेस है हाइपरबोला का, तो A और A dash के बीच की जो दूरी होगी वो 2A होगी, और B और B dash जो आपके पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपके वर्टिकल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, बट वो पॉइंट्स आपके हाइपरबोला पे कहीं नहीं लाई करते हैं. इस बात को याद रखना ज़रूरी है. अब चलिए एक रिजल्ट हम और देखते हैं कि एस ए प्लस एस ए डैश क्या होगा. एस ए प्लस एस ए डैश दैट इज इक्वल टू 2AE. तो दरअसल हो क्या रहा है, एस ए का मतलब क्या हुआ, एस ए का मतलब हुआ ए का डिस्टेंस फोकस से, और एस ए डैश का मतलब क्या हुआ, दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस उसी फोकस से, है ना. एस ए डैश मतलब इस वर्टेक्स का डिस्टेंस इस फोकस से, और एस ए मतलब इस वर्टेक्स का डिस्टेंस इस फोकस से. तो दोनों वर्टेक्स का डिस्टेंस हम एक फोकस से अगर मेज़र करें तो उसका वैल्यू आता है 2AE, राइट. अब अगर हम चले आगे,
देखिए मैं इस सब के डिटेल्स में नहीं घुस रहा हूँ, ये सब बहुत ईजी है। एक बार अगर आप ये डायग्राम बना लेते हैं तो और वो डेफिनेशन याद रखते हैं तो ये सारी चीज़ को आप निकाल सकते हैं। सी जेड क्या है हमारा, सी जेड क्या है, एम जेड क्या था, डायरेक्ट्रिक्स था। जब डायरेक्ट्रिक्स एम जेड है तो उसका डिस्टेंस हम सेंटर से निकाल रहे हैं उस डायरेक्ट्रिक्स का, वही है हमारा सी जेड, और उसको हम लिख रहे हैं ए बाई ई। तो ये पॉइंट्स आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है, याद हो जाएगा, कुछ वैसा नहीं है, रटना नहीं है, एक बार आप डायग्राम बना लेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वर्टिसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फोकाई का कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए, ए कोमा 0 और माइनस ए कोमा 0। ए डैश को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स एक्सिस और बी बी डैश को बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। बी बी डैश आर नॉट ऑन द कर्व। पॉइंट जो है बी का हम लेते हैं 0 कोमा बी और बी डैश का लेते हैं 0 कोमा माइनस बी, और मैंने फिर से ये रिमाइंडर के लिए बात लिख दिया है कि बी बी डैश डज नॉट लाई ऑन द कर्व। अब चलते हैं आगे डायरेक्ट्रिसेस पे। तो देखिए जो एम जेड और एम डैश जेड डैश है, क्या होगा उसका इक्वेशन, एक एम जेड का इक्वेशन हो गया एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो ए बाई ई डिस्टेंस पे लाई कर रहा है सेंटर से। और एम डैश जेड डैश क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। चलिए अब आगे चलें तो ज़रा देखें कि लैटस रेक्टम के बारे में क्या लिखा है। लैटस रेक्टम देखिए एक सिंपल सा डायग्राम है आपके पास, ये हाइपरबोला है, एक साइड हाइपरबोला का, ऐसे ही इस तरफ भी एक पार्ट होगा उसका, ठीक। अगर मैं कोई एक पॉइंट लेता हूँ एल इस हाइपरबोला पे, यानी ये लैटस रेक्टम है। लैटस रेक्टम वो कोड होता था कर्व का जो फोकस से पास करता था, तो ये कोड जो एल एल डैश है ये फोकस से पास कर रहा है। तो फिर एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यानी सी एस और एल एस। अब सी एस की वैल्यू क्या है, सी एस की वैल्यू ए ही है ना, और एल एस हम नहीं जानते हैं, तो निकालना बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे, हाइपरबोला के इक्वेशन में x की का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखिए y का वैल्यू निकल के आ गया, एल एस का वैल्यू, है ना। अब हमारे पास एक और रिलेशनशिप होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। किस चीज़ के लिए, हाइपरबोला के लिए। तो क्या किया हमने, ई स्क्वायर माइनस 1 की जगह बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पुट कर दिया, तो एल एस स्क्वायर का वैल्यू बी 4 बाई ए स्क्वायर आ रहा है। यानी जो लैटस सेमी लैटस रेक्टम है एल एस, इसका लेंथ निकल के आया हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन ए, है ना। तो टोटल लैटस रेक्टम का लेंथ निकालना, बस उसको ट्वाइस कर देना है, यानी 2b स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि लैटस रेक्टम का लेंथ हाइपरबोला में 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है। यहाँ से एक छोटा सा रिजल्ट हमने डेराइव किया इस रिलेशनशिप को यूज़ करके। ये रिलेशनशिप क्या कर रहा था कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये कुछ नहीं है, बस मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, अलजेब्राइक। अब चलिए मैं थोड़ा ये बात फिर से समझा दूँ कि एक्चुअली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम। सो सी, फॉर अ पॉइंट एल we can locate it by the x coordinate and the y coordinate. So what is the x coordinate of L? It is CS, right? And the y coordinate is LS. Okay. So CS is known. How it is known? Because the coordinate of focus is known, the x coordinate, it is A. So how the y coordinate can be found? We can find it by just substituting in the equation of the hyperbola, and we will get corresponding y points. So we got it, and just we used another relationship between b and a, and finally we got it as b square upon a. So the length of lattice rectum is 2b square upon a. I hope that it is clear. You can pause the video, you can see, draw the diagram on your copy, and you can then analyze each point one by one. Okay. So now moving ahead, an important property. What is this important property? See, the difference of the focal distance of any point on hyperbola is constant. The difference of the focal distance of any point on the hyperbola is constant. That means ये है हमारा हाइपरबोला, ठीक है। mz क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, m डैश z डैश क्या है, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, S क्या है, एक फोकस, S डैश क्या है, अनदर फोकस। तो P पॉइंट हमने ले लिया एक हाइपरबोला के ऊपर, ठीक है। P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने एक डायरेक्ट्रिक्स पे जिसका नाम दिया हमने PM, और दूसरे डायरेक्ट्रिक्स पे जिसका नाम दिया हमने PM डैश। ओके,
अब देखिए, क्या मैं एस पी इज इक्वल टू ई पी एम लिख सकता हूँ? एस पी इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो डेफिनेशन ही है हाइपरबोला का। कैन वी राइट एस पी इज इक्वल टू ई पी एम? यस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपरबोला। सो पी एम की जगह पे मैंने रखा है जेड एन। जेड एन क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये 90 डिग्री, ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, देयरफॉर जेड एन इज इक्वल टू पी एम। ठीक, एस डैश पी इज इक्वल टू ई पी एम डैश। ठीक है, ऐसे ही ई जेड एन जेड डैश एन लिखा। उसके बाद एस डैश पी माइनस एस पी का वैल्यू चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट। हम क्या निकाल रहे हैं? फोकल डिस्टेंस पी का। फोकल डिस्टेंस मतलब फोकस से डिस्टेंस, तो एस डैश पी, एक फोकस से डिस्टेंस एस पी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो आप थोड़ा सा जो बेसिक मैनिपुलेशन है, अगर इसको आप कर लेंगे तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा ट्वाइस ऑफ ए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। What this result is actually telling that if you take any point on the hyperbola and measure its distances from both the focus and subtract it, then it will always come to be a constant, and that is equal to twice of a. I hope that this point is clear to you all. Now moving ahead, this is the most easiest thing for any curve, position of a point. Okay, so we are trying to know that whether a given point lies outside of the hyperbola or lies on the hyperbola or lies inside the hyperbola. So if it is outside, if we substitute h and k on the equation of hyperbola, then it will come out to be greater than 0. That means outside. If it comes to be equal to, then it is on, and if it's less than, then inside, right? Now coming to the parametric equation of hyperbola, as we saw in the case of ellipse, what it was? I hope you all might be remembering it. It was a cos phi and b sin phi, right? So here in the case of hyperbola, it is x is equal to a sec phi and y is equal to b tan phi. So, and this is referred to as point phi. So the basic things that you needed in a hyperbola, the basic summary of all the concepts, I have presented it today. Now coming to the equation of tangents and normals, I will be discussing in another video. So you should practice on your own, and you should also go through the textbooks, read the definitions, because if you will be very much clear with the definitions, then that much fluency you will be having with the problems. ये बात मैंने पहले भी कहा कि definitions हम लोग मैथ्स में इग्नोर करते हैं बहुत सारे बच्चे, लेकिन नहीं, जितना क्लियर आप definitions और proofs के साथ रहेंगे, आप उतना ही क्लियर क्वेश्चंस बनाने के वक्त रहेंगे। थोड़ा भी क्वेश्चन ट्विस्ट होगा तो आपके पास अगर फंडामेंटल्स क्लियर है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।